Hello, good afternoon, friends. Welcome to iPrudent Talks, a deep dive into the financial services sector. Today, we have the pleasure of hosting Mr. Sandeep Jain. He's a chartered accountant and a BCom honors from Calcutta University with over 14 years of experience in research and fund management. And he's currently a fund manager at Motilal Oswal, who will be handling the Motilal Oswal Financial Services NFO. And previously, he's worked with Aditya Birla Sun Life, Sundaram AMC, MK Global, and IDBI Capital. Mr. Jain will share his insights today on why the financial services sector offers structural and long-term opportunities. Please join me in welcoming him. Welcome, Mr. Sandeep. Yeah, thank you. And for want of better connectivity, I am switching my video, right? I think it is fine. Yeah, that should be okay. That should be okay, right? Okay, thanks. So thank you for a nice introduction. And we have launching our new NFO, which is called Financial Services Fund, right? And the heading itself, जो ये हेडिंग है रीसेपिंग फिनांस एंड री इमेजिनिंग अपॉर्चुनिटीज, ये अपने आप में मैं आगे आपके 20-25 मिनट क्या बोलने जा रहा हूँ ये आपको प्रेजेंटेशन के दो हेडिंग में ही समझ में आ जाएगा कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इन दिस फाइनेंशियल सर्विसेज फंड. Now, let us kind of make a flow of presentation is what are financial services, why, just hold on, why financial services now, and why Motilal Oswal Financial Services. सो व्हाट आर फाइनेंशियल सर्विसेज, ये हम सबको पता है कि फाइनेंशियल सर्विसेज क्या होती है, राइट? फाइनेंशियल सर्विसेज में बैंक होते हैं, एनबीएफसी होती है, स्मॉल फाइनेंस बैंक होता है, आपके इंश्योरेंस कंपनी होती है, आपके जनरल इंश्योरेंस कंपनी, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, एक्सचेंजेस, ब्रोकर्स, सब कुछ आपके फाइनेंशियल सर्विसेज में आता है. मगर उससे इंपॉर्टेंट अगर मैं आपको एक चीज बताऊं कि लास्ट 10 सालों में ये सेक्टर में क्या क्या चेंजेस हुए हैं और ये सेक्टर कितना ब्रॉड हुआ है. ठीक है, अगर मैं नंबर ऑफ लिस्टेड कंपनीज की बात करूं, ठीक है, तो 2010 से 2024 तक में जो बैंकिंग, सिर्फ बैंकिंग सेक्टर वाले कंपनियां थे वो 26 से 41 हो गए. सेम एनबीएफसीज हैव इंक्रीज्ड, सेम स्टॉक ब्रोकिंग हैज इंक्रीज्ड, रेटिंग एजेंसी हैज इंक्रीज्ड, माइक्रो फाइनेंस कंपनी इंक्रीज हुई है, और फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, जनरल इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, एवरीथिंग हैज इंक्रीज्ड. सो दिस सेक्टर इज अ वेरी ह्यूज सेक्टर in terms of the number of companies, and not only the number of companies, if you look at the growth in both lending and non-lending. So इस सेक्टर को अब दो पार्ट में डिवाइड करते हैं. पहला पार्ट है लेंडिंग, दूसरा पार्ट है नॉन लेंडिंग. लेंडिंग में आपके बैंक, एनबीएफसी और स्मॉल फाइनेंस बैंक आते हैं. नॉन लेंडिंग में बाकी आपके कैपिटल मार्केट, इंश्योरेंस कंपनी, एक्सचेंजेस, ब्रोकरेज, एवरीथिंग कम्स इनटू द नॉन लेंडिंग, राइट? सो लेंडिंग बिजनेस का मार्केट कैप पिछले 10 साल में 4 गुना हुआ है. 18 लाख 17.8 लाख करोड़ टू 69 लाख करोड़, 4x, राइट? वेयरएज नॉन लेंडिंग का जो मार्केट कैप है वो 2 लाख करोड़ से 31 लाख करोड़ हुआ. दैट इज 15x. ठीक है, ये जो सुपर ग्रोथ है वो ग्रोथ आपके नए सेक्टर्स जैसे कैपिटल मार्केट, इंश्योरेंस, डिस्ट्रीब्यूशन, फिनटेक वगैरह से आई है. ऐसा नहीं है कि लेंडिंग ग्रो नहीं कर रहा है, लेंडिंग भी ग्रो कर रहा है और नॉन लेंडिंग भी ग्रो कर रहा है. इसी रीजन से अगर आप देखो कि इस सेक्टर का पैट इतना बड़ा है. 2016 में बीएफएसआई का पैट निफ्टी पैट में 16% था. सो जो निफ्टी का पैट का अगर से सपोज 100 रुपए निफ्टी का पैट था तो उसमें 16% बीएफएसआई कंट्रीब्यूट करता था. 2015 में वो 22% हुआ, 2020 में वो 25% हुआ, और 2025 में वो 33% हो गया. So 33% of the Nifty pack is contributed by the BFSI sector. Not only this, if you look at market cap, 14% market cap था 2010 में, which is now increased to 24%. So this sector, इसकी profitability growth निफ्टी पैट ग्रोथ से ज्यादा है, और जो मार्केट कैप है वो 1/4, 24-25% of the overall market cap है. So which is 24% of the overall market cap is BFSI. ठीक है, so this is such a wide and big sector. Not only that, अगर आप देखोगे 2010-2015 में banks was 84% and NBFC was 15%. 2025 में बैंक was 57%,
जो कि रिड्यूस हो गया 84 से 57, और बाकी एनबीएफसी, इंश्योरेंस, कैपिटल मार्केट एंड ऑल इज नाउ 53%। सो द पॉइंट यहाँ पे ये है, सो द पॉइंट यहाँ पे ये 43%। सो द पॉइंट यहाँ पे ये है कि ये सेक्टर बड़ा भी हो रहा है, लेंडिंग नॉन लेंडिंग दोनों ग्रोथ कर रहे हैं। लास्ट 5-7 सालों में जो फिनेंशियल सर्विसेज है विच इज ग्रोइंग मच बेटर कंपेयर टू द लेंडिंग, राइट, एंड दैट इज द रीजन द मार्केट कैप शिफ्ट इज हैपनिंग। नाउ द क्वेश्चन यहाँ पे कि यहां से भी आगे हो सकता है क्या? ये तो इतना हुआ, अब पहले ये समझते हैं कि ये इतना हुआ कैसे 16 से 33%, और वो भी एकदम स्ट्रक्चरल वे में हुआ। ऐसा नहीं है कि एक साल कम एक साल ज्यादा, अगर आप 5 साल का गैप देखेंगे तो हर 5 साल में एक स्ट्रक्चरल वे में इंक्रीज हुआ। और ऐसा भी नहीं है कि मार्केट कैप इंक्रीज हो रहा है, मार्केट कैप भी 24-25% एक स्ट्रक्चरल वे में इंक्रीज हुआ। नाउ फर्स्ट लेट अस अंडरस्टैंड कि ऐसा हुआ क्यों, इसके पीछे इनेबलर्स क्या क्या थे। ठीक है, तो अपन को ये समझ के आएगा कि वाई फाइनेंशियल सर्विसेज नाउ, पहले ये इतना आगे क्यों बढ़ा। इतना आगे आपके ये बढ़ा है कि अगर आप इनेबलर्स की बात करो, ठीक है, फॉर्मलाइजेशन, अकाउंट एग्रीगेटर, डिजिटाइजेशन, जनधन, ऑल दिस टेक्नोलॉजी अलोंग विद द फॉर्मलाइजेशन, ये दोनों ने मिलके हेल्प किया इन टर्म्स ऑफ दिस सेक्टर को ग्रो होने में। अगर मैं बात करूं फॉर्मलाइजेशन की, शुरुआत 2016-2017 से हुई। 2017 में आपके जीएसटी आया, जीएसटी एंड ई विल ने बहुत सारे एमएसएमई, बहुत सारे एसएमई को आपके फॉर्मलाइज किया, अनफॉर्मलाइज टू फॉर्मलाइज किया। ठीक है, जिससे आप जो बहुत सारी एमएसएमई और एसएमई जो फॉर्मलाइज वे में काम नहीं करनी थी, दे कम इनटू द फॉर्मलाइजेशन वे, व्हिच हैज इंक्रीज्ड इन टर्म्स ऑफ टोटल एड्रेसेबल मार्केट। टोटल जिसको बैंक्स और लेंडिंग कंपनी लोन दे सकती है, वो मार्केट इंक्रीज हुआ क्योंकि आपके सारे रिकॉर्ड्स अब डिजिटाइज और प्रॉपर हो गए थे। देन कम डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, यूपीआई, जनधन योजना, आधार इनेबल्ड पेमेंट, राइट। इससे क्या होगा कि अगर कोई भी मर्चेंट को अगर हम डायरेक्टली कैश नहीं करके आधार इनेबल्ड पेमेंट करते हैं, राइट, दैट इंक्रीजेस द ओवरऑल अगेन टोटल एड्रेसेबल मार्केट ऑफ द बैंक, क्योंकि उसके पूरे रिसीट्स, दिन भर में उसके कितने रिसीट्स आए कितने नहीं आए, सारे बैंक के पास रिकॉर्ड है। ठीक है, उसके अलावा अगर आप देखोगे फॉर्मल सेक्टर हायरिंग, which has increased by CAGR of 17.5% between FY19 to 25. All these things have led to higher retail growth, हायर क्रेडिट ग्रोथ। तो 12% की जो नॉन फूड क्रेडिट ग्रोथ हुई, उसमें एसएमई की ग्रोथ 20% है, हाउसिंग की ग्रोथ 17% है, ठीक है, पर्सनल लोन की ग्रोथ 16% है, और सर्विसेज की ग्रोथ 15% है। सो जो आपके रिटेल एमएसएमई ग्रोथ इज बेटर, एंड दैट हैज कंट्रीब्यूटेड द इंक्रीज इन द स्ट्रक्चरल पैड। जो बीएफएसआई पैड का इंक्रीज हुआ है, निफ्टी 50 के पैड में मेरा परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है, दिस इज वन ऑफ द फैक्टर ऑफ फॉर्मलाइजेशन, डिजिटाइजेशन, इनकम टैक्स मेजर्स। अभी फॉर एग्जांपल इनकम टैक्स मेजर, फेसलेस असेसमेंट्स, आप अगर रिटर्न फाइल करते हो एंड ऑल दिस आर बिकम नाउ ऑनलाइन, राइट, एंड क्विकली थिंग्स हैपेंस। सो इनका कोई भी नॉन सैलरीड बंदे होते हैं, उनके लिए आपको इनकम टैक्स रिटर्न हो गया, उनके लिए उनका जीएसटी सर्टिफिकेट हो गया, उनके लिए उनका जीएसटी रिटर्न हो गया। बैंक्स आर हैप्पी विद दैट इन टर्म्स ऑफ लेंडिंग टू दोज डॉक्यूमेंट rather than undocumented or informal kind of thing. So this is the reason why this is the steady increase in the BFSI PAT contribution to the overall Nifty PAT. Now ये तो हो गई हमारी लेंडिंग वाली पार्ट, राइट। नाउ कम्स टूवर्ड्स व्हाट हैपेंस टू द नॉन लेंडिंग, क्योंकि जो मैंने आपको नॉन लेंडिंग बताया वो भी बहुत जोर से ग्रो हुई है। अब नॉन लेंडिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मनी इन द बैंक। अगर पैसा बैंक में होता है तो उसको आप क्रॉस सेल करके म्यूचुअल फंड भी बेच सकते हो, उसको आप इंश्योरेंस भी बेचते हो, उसको आप पीएमएस भी बेचते हो, उसको आप एआईएफ भी बेचते हो, उसको आप इक्विटी भी बेचते हो। So number of account which has opened in the last 10-15 years, not only salaried, also onto the non-salaried, has helped in contribution to the mutual fund AUM. So आज के 5 साल पहले जो 22 लाख करोड़ का म्यूचुअल फंड AUM हुआ करता था, FY25 एंड में वो 65 लाख करोड़ का है, और अभी की डेट में वो 80 लाख करोड़ का है। ठीक है, और ये स्टेडी इंक्रीज हुआ है। अगर आप एसआईपी कंट्रीब्यूशन देखो तो स्टेडी इंक्रीज हो रहा है। आज की डेट में जो लास्ट डेटा आया था उसमें एसआईपी आपको दिख रही है 31,000, right, and average ticket size of SIP is still below 3,000, 2,700, 2,800. That shows the amount of not only the formalization, ठीक है, formalization के साथ साथ awareness of the public कि the mutual fund is something which
can grow at a somewhere around 15-16% CAGR kind of thing, and that is the reason if you look at the AUM from FY14 to FY25 have grown by 20% CAGR, 20% CAGR. Okay, so this is one of the factors, that is mutual fund AUM growth has also led to higher PAT growth of the BFSI sector compared to the Nifty 50. Then comes to the insurance sector. Insurance sector has also seen a decent growth, right? Almost doubled in last 7-8 years, right? General insurance, we have seen a decent growth, right? So all these sectors, general insurance, life insurance, your mutual fund has contributed to the Nifty PAT, despite if you look at India ka insurance penetration is one of the lowest. Okay, then it comes to the capital market activity and exchanges activity, right? We have seen post COVID the heightened capital market activity in India. Obviously हमारा capital market भी धीरे धीरे mature हुआ. Average age of people in India is 34 years, 140 crore population, right? All these things have led to higher, kind of turnover, higher kind of contracts in the market. Though I understand ये growth वापस 1-2 साल तक इतनी नहीं हो, थोड़ी कम हो, but it will remain higher than the other developing countries and all. That we can take a call, but that has contributed the overall 30%, 33% of the Nifty pack. Then in terms of the velocity of money, फॉर एग्जाम्पल अगर डिजिटल ट्रांजेक्शन इंक्रीज होते हैं, आपके चेक ट्रांजेक्शन कम होते हैं, आपके मनी इज मूविंग फ्रॉम वन बैंक टू अनदर मर्चेंट, अनदर सप्लायर चेन क्विकली, ठीक है, तो आपके बैंक की एफिशिएंसी इंक्रीज होती है. सो दैट इज अ डिजिटल रिवोल्यूशन विच हैज हैपेंड. ठीक है, गॉन आर द डेज की कोई भी आपको एसआईपी करने के लिए पहले 3 दिन 2 दिन फॉर्म लिखना पड़ता था, वो जमा कराना पड़ता था, 3-4 दिन में बैंक की एसआईपी खुलती थी. नाउ इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ 5 मिनट्स, योर केवाईसी वुड बी डन. फॉर एग्जांपल अगर आपने कभी कोई नए क्लाइंट का केवाईसी किया होगा तो विद इन 5 मिनट्स केवाईसी हो जाता है और उसको मेल भी आ जाता है कि योर सीआरए डिटेल्स हैव बीन fetched by so and so company and all. So all this digital revolution has led to better businesses, reducing friction and increasing the efficiency of the bank, which has further led to investment in all this kind of digital transactions. So this has also helped in terms of the overall PAT contribution, because आपका operating leverage increase हो जाता है, efficiency increase हो जाती है. So all these things taken together, उसके बाद भी अगर मैं आज की penetration की बात करूं तो which is one of the lowest. Your mutual fund penetration is somewhere around 20%, your wealth management penetration is 6%, your insurance is 4%, retail lending is 14%, and overall credit card is somewhere around 3%. So यहाँ पे अगर मैं देखूं कि लास्ट 10 सालों में क्या हुआ है जिसके कारण आपका 14-15% का पैट कॉन्ट्रीब्यूशन 33% हो गया और आपके 14-15% का मार्केट कैप has gone to 24%. Now why financial services now? ये तो हमने समझा कि क्या क्या स्ट्रक्चरल मूव्स हुए हैं. जीएसटी वाज अ स्ट्रक्चरल मूव, यूपीआई इज कंटिन्यूइंग इन इंडिया, राइट? Apart from this two structural move which has a step 2, step 3, step 4 kind of effect, right? अभी और क्या क्या हुआ, ठीक है, अभी और क्या क्या हुआ, ठीक है. तो अभी अगर मैं देखूं और यहाँ पे क्या हो रहा है और अभी फाइनेंशियल सर्विसेज क्यों, तो इसके मैं सबसे पहले बात करूं इन टर्म्स ऑफ just hold on, हाँ, in terms of this thing, in terms of what the steps government has taken in the last 1 year, ठीक है. 2025 के बजट में और 2025-26 में बहुत सारे स्ट्रक्चरल स्टेप लिए गए. पहला स्ट्रक्चरल स्टेप कि 12 लाख से नीचे कोई टैक्स नहीं होगा. तो उससे आपको क्या हो गया कि हाउस होल्ड इनकम जिसके 12 लाख से नीचे की इनकम है या 12 लाख तक की इनकम है, उसका हाउस होल्ड इनकम इंक्रीज हो गया क्योंकि टैक्स नहीं है उसको. देन जीएसटी रेट कट, अगेन जीएसटी कट से you have given us somewhere around 1 लाख करोड़, 1,000 बिलियन का आपको गवर्नमेंट का रेवेन्यू का इंपैक्ट हुआ. दैट मींस दिस इज कमिंग टू द सिस्टम काइंड ऑफ थिंग. सो दिस आर द स्ट्रक्चरल मूव. उसका स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 trickle down effect will come in the future course. Then you have a CRR cut, then you have a OMO purchase, and then you have a dollar rupee swap and all. So all these things have put in somewhere around 10 से 11 लाख करोड़ सिस्टम में आया, and that is the reason अगर आप देखो लास्ट 2-3 मंथ से क्रेडिट ग्रोथ इज स्टेडली इंक्रीजिंग. 10-10.5% का क्रेडिट ग्रोथ. द लास्ट फोर्टनाइट नंबर ऑफ द क्रेडिट ग्रोथ वाज 13%. एंड मेरा ही मानना होता है कि कोई भी जब आप स्ट्रक्चरल मूव लेते हो, वो स्ट्रक्चरल मूव 3-6 महीने तक नहीं रहता. दैट्स अ स्ट्रक्चरल मूव. वो 2 साल 3 साल 4 साल तक रहता है. सो दिस इज वन ऑफ द पॉइंट विच आई एम ट्राइंग टू से कि लेंडिंग ग्रोथ कैन कंटिन्यू एंड दैट कैन क्रिएट अनदर पैट कंट्रीब्यूशन टू द बीएफएसआई विच इज बेटर देन द ओवरऑल निफ्टी 50 ग्रोथ.
देन इन टर्म्स ऑफ, ये तो हो गया लेंडिंग करने की बात, ठीक है। इसमें और फैक्टर आप ले सकते हो, फॉर्मलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी एंड ग्रोइंग वर्किंग पॉपुलेशन, इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन, सो दैट इज रीशेपिंग द लेंडिंग। सो मैंने जो बोला कि रीशेपिंग फाइनेंस, री इमेजिनिंग अपॉर्चुनिटीज। सो जो रीशेपिंग फाइनेंस है, वो फाइनेंस का आपका now helping by the fintechs also, helping by the technology also, helping by the digitization also, this finance is getting reshaped, right? This finance, the assessment of the credit can become easier, the collection is getting easier, so all these things are adding to your lending growth. So that is what is called reshaping finance. Now रीइमेजिनिंग अपॉर्चुनिटीज, और अपॉर्चुनिटी हम क्या इमेजिन कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ द ओवरऑल नॉन लेंडिंग में, ओवरऑल नॉन लेंडिंग में, ठीक है। तो एक चीज तो अपने को समझ में आई कि 5-6 साल में हमारा जो म्यूचुअल फंड एयूएम है, हमारा जो म्यूचुअल फंड एयूएम है वो 4 से 5 गुना हो गया। 23 लाख करोड़ का एयूएम आज 80 लाख करोड़ हो गया, 4 गुना हो गया, ठीक है। अब इसकी हम बात करते हैं कि वो सेम कस्टमर जो 7-8 साल पहले वाला कस्टमर था, जो म्यूचुअल फंड लेता था कोविड के पहले, आज वो सेम कस्टमर हैज क्रिएटेड दैट काइंड ऑफ वेल्थ एंड वो आपसे एआईएफ, पीएमएस, ये सब अलग अलग प्रोडक्ट मांग रहा है, ठीक है। सो दैट मीन्स द रेवेन्यू पूल ऑन दिस आइटम इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज, इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज। 23 लाख करोड़ का ईयूएम, 5 साल पहले 1% का ट्रेल कमीशन, समवेयर अराउंड 23,000 करोड़, राइट। मगर उसमें क्या है कि आपके इक्विटी वाला ईयूएम 7-8 लाख करोड़ होगा, तो समवेयर अराउंड 7,000-8,000 करोड़। नाउ द इक्विटी ईयूएम इज 40 लाख करोड़, उसमें अगर मैं 70-80 बेसिस पॉइंट भी लेता हूं जो ट्रेल कमीशन आपको मिलता है, तो विच इज अराउंड 20-25,000 करोड़, ठीक है। तो वो एक तो रेवेन्यू पूल हो गया। उसके बाद आपका वेल्थ मैनेजमेंट का रेवेन्यू पूल आता है, ठीक है। उसके बाद आपके एआईएफ, पीएमएस और जो डिस्क्रिशनरी पीएमएस है, एसआईएफ, ऑल्टरनेट्स, ये सब का रेवेन्यू पूल आता है। सो आरबीआई की एक रिपोर्ट के हिसाब से जो रेवेन्यू पूल है, विच इज गोइंग टू 5 times फ्रॉम द करंट समवेयर अराउंड 23,000 करोड़। आज का जो रेवेन्यू पूल है, जो वेल्थ मैनेजमेंट का रेवेन्यू पूल है, जो डिस्क्रिशनरी का रेवेन्यू पूल है, ठीक है, जो एआईएफ पीएमएस का रेवेन्यू पूल है, विच इज समवेयर अराउंड 23,000 करोड़, ठीक है, विच इज गोइंग टू इंक्रीज समवेयर अराउंड 117 लाख करोड़। मेरे थोड़े से एजम्पशन यहाँ पे बिठाए हुए हैं, अगर वो एजम्पशन 14% ग्रोथ वाले नहीं भी है, अगर वो एजम्पशन 10% ग्रोथ वाले भी है, इट कैन बी अ 1 लाख करोड़ ऑफ रेवेन्यू पूल फ्रॉम द करंट 20,000। सो द री इमेजिनिंग अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। ये जो वेल्थ इफेक्ट है, ये जो वेल्थ इफेक्ट है, ये इस चीज को भी बताता है कि लास्ट 1.5 year मार्केट्स आर नॉट डूइंग एनीथिंग, मार्केट से रिटर्न नहीं बना, बट वी हैव नॉट सीन अ मैसिव रिडम्पशन, रादर म्यूचुअल फंड में फ्लो कंटिन्यू है, एसआईपी कंटिन्यू है। सो ये बताता है कि ओवरऑल मैच्योरिटी ऑफ द इंडियन इन्वेस्टर, एंड दैट इज द रीजन आई हैव अ फीलिंग, आई हैव अ बिलीव दैट ये जो 1,10,000 या 1,20,000, 1,00,000 की मैं बात कर रहा हूँ रेवेन्यू की, वो आरबीआई और मेरे एजम्पशन के हिसाब से जो 10 साल है, हो सकता है कि वो पहले ही हो जाए, क्योंकि लास्ट 5 सालों में हमने 4 गुना तो रेवेन्यू म्यूचुअल फंड का डबल होते हुए देखा है, right? So this is reimagining opportunities in terms of the wealth management. Now the other part is that what is the other form of the cross selling? अब आपका बैंक अकाउंट हो गया, नंबर ऑफ बैंक अकाउंट इंक्रीज हो गए, फॉर्मलाइजेशन इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, नंबर ऑफ गिग वर्कर्स आर कन्वर्टिंग इनटू द फॉर्मल वर्कर, तो आपके ओवरऑल टैम इंक्रीज हो रहा है। नाउ द क्वेश्चन इज इंश्योरेंस एंड हेल्थ इंश्योरेंस, राइट। आज के 5-6 साल पहले आप अगर किसी को बोलते हैं कि आपका इंश्योरेंस इज नॉट प्रॉपरली, you are not properly insured or life insurance and all, he would not have listened you। बट आज 5 में से 10 लोग सुनते हैं और समझते हैं कि हाँ, मेरे को या तो प्रोटेक्शन लेना है या मेरे को या तो हेल्थ इंश्योरेंस इंक्रीज करना है। दैट इज कॉल्ड अ वेल्थ इफेक्ट, दैट इज कॉल्ड अ पर कैपिटा जीडीपी इफेक्ट। सो फॉर एग्जांपल इन 2010 our per capita GDP was $1,000. Currently the per capita GDP is somewhere around $2,700-$2,600. So at this point of time, cross selling of general insurance and life insurance means it's easier compared to the 10 years 15 years back. So वहां से भी आपके पैट contribution can increase the overall पैट contribution of the BFSI. So ये तो हो गया lending और non lending वाला part. Now अपने को समझ, एंड इस सब में क्या है कि इस सब में बीच में फिनटेक, सो फिनटेक्स आर समवन हु कैन बी अंडरस्टूड एज अ काइंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ द कंपनी और प्रोवाइडिंग द इनोवेशन काइंड ऑफ थिंग, राइट। फॉर एग्जांपल वी ऑल नो यूपीआई, the UPI जब आया, so people used to know the Paytm is the one, and also all this kind of innovator can increase in the future, right? And they are innovating the new product, they are providing the software services to the banks, right? And all this innovation can happen in the future. Insurance distributor, loan distributor, it is happening through the fintech kind of platform. So the distribution is changing, so your fintechs are also coming into the picture. So lending,
non-lending and fintech. Now come to some of the technical points. Technical points जिसमें कुछ जो आपके क्वेश्चन है, कुछ जो आपके मिथ्स है, वो सब आपके एड्रेस हो जाएंगे. पहला क्वेश्चन कि ड्यूरिंग द रेट कट साइकिल BFSI does well. Right, during the rate cut cycle BFSI does well, but the question is कि जब rate cut cycle खत्म हो जाता है तो BFSI अच्छा नहीं करता. That's a myth. So in this chart what I am showing you कि अगर हम इंडिया को 2000 से देखें, ईयर 2000 से लेके अभी तक हमारे 5 से 6 रेट कट साइकिल आए हैं. पहला रेट कट साइकिल है फरवरी 2002 से सितंबर 2004. फरवरी 2002 से सितंबर 2004. उसमें निफ्टी बैंक इज ब्लू बार, राइट. निफ्टी बैंक हैज आउट परफॉर्म द निफ्टी 50 एंड निफ्टी 500. ठीक है. अभी 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 यहाँ सितंबर 04 में अपना रेट कट खत्म हो गया. अब यहाँ से आइदर रेट इज स्टैग्नेंट और रेट इंक्रीज हो रही है. तो सितंबर 04 से सितंबर 05, जस्ट 1 ईयर आफ्टर द रेट कट साइकिल एंड, निफ्टी बैंक एंड निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज हैज आउट परफॉर्म द निफ्टी 50 एंड निफ्टी 500. Then 2 years after the rate cut, that is September 04 से September 06, Nifty Bank and Nifty Financial Services has again outperformed the Nifty 50 and Nifty 500. अगर आप देखोगे 1 year after the rate cut cycle and 2 year after the rate cut cycle, all period Nifty Bank and Nifty Financial Services has outperformed the broader index except COVID. Except COVID. So जो ये एक myth है कि after the rate cut stops, banks and BFSI doesn't do well. That is not the right way to look at it. BFSI continue to do well. The reason is it is so broad. It is so broad that some of the subsector rotation can give you a better return. And mind you, these are the Nifty Bank and Nifty Financial Services जहां पे आपके large cap ज्यादा है. Mid cap and small cap has done much better in last 10-12 years compared to the large cap financial services, right? This is one of the technical factor. Now coming to the asset quality and valuation. So if I look at the asset quality and valuation, in terms of asset quality and valuation, your GNPA and NNPA is one of the lowest, right? In the recent time, your corporate NPA cycle are over. A lot of recoveries and things have happened. Now the question is that unsecured NPA, बार-बार वही unsecured NPA आते हैं, but मेरे हिसाब से जो unsecured NPA है वो 1-2 quarter में resolve हो जाते हैं. It is not a big dent onto the balance sheet, and there are a lot of things a bank and NBFC can do to restrict the rise of the unsecured NPA. So बहुत सारे उनके पास बहुत सारे steps वो ले सकते हैं उसमें. Now in terms of the valuation, this valuation is 15-20 days back, which was 30% lower to the broader index. अभी ये थोड़ा सा कम होके 15% हो गया. The point is that still the valuations are comfortable for this sector. Now, the most important point in terms of the last 8 months, right? अभी लास्ट आरबीआई ने जो सीआरआर कट किया, जो ओएमओ किया, ठीक है, उसके अलावा उसने बहुत सारे कैपिटल वाले कैपिटल रूल्स रिलैक्स किए हैं. द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कैन हैपन इनटू द बैंक, राइट? सो अप्रैल 2025 से लेके दिसंबर 2025 तक, right? April 2025 to December 2025, which is around 8 months, right? We have seen somewhere around 12.1 billion of direct FDI into the financial services sector, right? Direct FDI, and everybody has bought some or the other stake. इसमें तो मैं 4,000-3,000 करोड़ की से नीचे वाली डील लिखा नहीं हूँ. इसमें जो भी डील लिखा हूँ वो 4,000 करोड़ से ऊपर वाली है. 12.1 billion is somewhere around 1,10,000 odd crores direct FDI in last 8 months in the financial services sector. I have never seen this in the 20 year of my career कि such a short span of time, 8-9 months में इतना सारा पैसा आता है. So this reflects the optimism around India's FSI growth. So now, if you understand why financial services now, the financial services now, I have given you 6-7 points. Lending may be, non-lending may be, lending may be, regulator and governor came together to increase the consumerism, which will increase the overall bank credit growth. Non-lending, there is a huge opportunity, that is a reimagining opportunities, and your wealth management, insurance, life insurance sector on the verge to further grow from here. Then fintech is a new distribution arm, right? They are distributing product also, they are innovating also. So all these three
All these three expected to lead the PAT growth of BFSI better than the overall Nifty PAT growth. And that is the reason I understand this sector in the next 3-5 years can also do well. What has done in the last 15 years. If I look at the next, 5 साल में मैंने आपको दिखाया ये कि किस तरह से PAT contribution and all increase हुआ है. Now, why Motilal Oswal Financial Services? Why Motilal Oswal Financial Services? And what the kind of differentiating approach which I will have, right? So, why Motilal Financial Services is in terms of it would be core plus alpha strategy, right? Core plus alpha strategy. How I will be different from the peers? So, मैं अपने फंड में 40 से 50% स्मॉल कैप एंड मिड कैप रखूंगा, 40 से 50% लार्ज कैप रखूंगा. That is called as a core plus alpha strategy. Core strategy relatively stable earning profile and better balance sheet, which is a 40 से 50% large cap. And alpha strategy, which will be a high growth profile company strategy, which is 40 to 50% is a small cap and mid cap, right? It would be a high conviction 20 to 25 stock. अगर आप पीयर से देखोगे मेरा एक्टिव रेशियो आपको हमेशा ज्यादा दिखेगा. मेरा बेंचमार्क है एनएससी फाइनेंशियल सर्विसेज जिसके 70%, 70% इज लार्ज कैप. When I am saying I would be 40 to 50% large cap and 40 to 50% small and mid cap, so मेरा एक्टिव रेशियो ऐसे ही ज्यादा हो गया. मोतीलाल ओसवाल के सारे फंड में आपको एक्टिव रेशियो ज्यादा दिखेगा एंड इट वुड बी अ काइंड ऑफ कोर प्लस अल्फा स्ट्रेटेजी. So that would be a differentiating factor compared to the peers. अगर मैं peers के portfolio की बात करूं तो 90% of the peers portfolio are somewhere around 60 to 70% is a large cap and 20 to 30% is a mid cap, right? I would be 40 to 50% large cap, 40 to 50% would be mid cap and small cap. So that would be the differentiating point which I have. I think I'll stop here and wait for the questions. Thank you very much, Sandeep. Yeah. For your insights on financial services sector. I agree. I mean, the growth has been, phenomenal as far as our, mutual fund industry is grown. The SIP also, as you said, continues to grow. So feel a lot of future is there for, especially AMCs, wealth management firms. And as far as, I mean, your strategy is concerned, you gave a brief about core and, strategy. So, sorry, satellite. So core may, when you're saying 50% will be large cap, so large cap will also have PSUs also, private banks. I mean, what is your view on between private and PSUs currently? Okay, so you have asked two questions. So first of all, you have large cap will have a private banks and PSU. So let me tell you, as per the MP classification, 100 companies are there in the large cap. In 100 companies, there are 6 bank which is in large cap. There are 3 NBFC, 4 NBFC which is large cap. There are 2 insurance company is in the large cap, and there are 2 AMC which is in the large cap. So मेरे पास somewhere around 14-15 कंपनियों का pool है which is a large cap. So when I am saying a large cap, I am not saying that it would be a safe banks kind of thing. In the large cap also, I will see कि किसमें मेरा growth or relative valuations are comfortable and which can provide me a better return. Large cap आपके volatility कम देता है, which is sure, ठीक है. But at the end of the day, even in the large cap, you have to choose that which can give you a lesser volatility and better returns in the next 2 to 3 years or 4 years. और अगर मेरा वहां पे अगर say suppose अगर at that point of time NBFC is better compared to banks or NBFC or capital in the market is better compared to the NBFC, I will move in that direction. It is not necessary I will go for the safe banks, right? Now you have a second question in terms of the private bank versus the PSU bank. Right? So in the private bank versus the PSU bank, if you look at the current juncture, when your cost of fund is getting lower into the industry, जब आपके cost of funds कम हो जाते हैं, तो जो bulk borrow करता है, right? उनका cost of funds कम हो जाता है, and that is a beneficial thing for the PSUs or NBFCs and all. So at present, the reduction in the cost of fund into the system can be beneficial for those guys who have a higher cost of fund book like NBFC, PSU banks and SFBs and all, right? Private banks is a kind of mid-cycle play जिनके पास एक stable liability profile होती है and their cost of fund is always lower compared to the other guys. So that is the kind of view between private and PSU, and that is the strategy which I am trying to say. Hope I am able to answer your question. Yeah, sure.
So we'll just see questions have come. So I think first question I have strategy ये been तो हो गया. answered. Yeah. Second So question how again long from should I Mr. plan? Saurav. How long should I plan to keep my money in this fund to see a good return? So सौरभ जी, मैंने आपको दिखाया कि अगर आप 2010 से देखो तो 10% का 16%, 16% का 20%, 20% का 25%, 25% का 33%, 33% ऑफ द BFSI पैट इज निफ्टी. ठीक है. और मैं मार्केट कैप की भी बात करूं तो 14% का 16%, 16% का 20%, 20% का 24%, 24% ऑफ माई ओवरऑल मार्केट कैप इज द BFSI. ठीक है. सो जनरली अगर मैं देखूं तो इसमें ये बोलना कि ये इन आउट फंड होगा, टैक्टिकल थीम होगी, अगर मैं नंबर्स देखूं तो मेरे को तो स्ट्रक्चरल दिखता है. सेकंड, आपका क्वेश्चन कि कितने साल तक किसी क्लाइंट को रखना है, तो मिनिमम 3 to 5 years इज द जनरल आंसर फॉर दैट. ठीक है. Other non-BFSI fund also have high allocation to BFSI sector. Why go for this fund? So look, I told you in my strategy that I would be different from the peers in terms of my allocation towards 40 to 50% in mid cap and small cap, 40 to 50% in large cap. Other peer funds have slightly more weightage on the large cap, and I mean that also other or more funds have a slightly more percentage on the four safe banks, four top banks kind of. I would be different from that. So I What think the question is that say जो other flexi cap funds हैं या दूसरे funds हैं तो उसके अंदर भी around 30% allocations are towards अच्छा, BFSI sorry, sector. other non BFSI fund. हाँ Okay, non okay, okay, BFSI है ना तो okay. हाँ. Sorry. I missed that. So okay, that is a nice question. So अगर मैं देखूं कि other non BFSI fund, for example, अगर large cap fund है, ठीक है, उसके पास 30% उसके पास बैंक या फाइनेंशियल सर्विसेज होंगे. मगर लार्ज कैप फंड किस बैंक और फाइनेंशियल सर्विसेज में किस स्टॉक में डालेंगे? दो 60 to 70% they have to put in the large cap banks only. So I have a license for a mid cap and a small cap bank. They don't have a license because उनको 60, 70, 80% large cap banks में ही रखना है या large cap financial services में ही रखना है. Similarly, mid cap funds, they have a kind of regulatory कि उनको 60-70% मिड कैप बैंक्स में ही रखना है. ठीक है. सो दैट इज अ डिफरेंस. मेरे यहाँ पे अगर हमने लास्ट 10 साल में BFSI का रिटर्न्स देखा होगा तो मेजर रिटर्न्स हैज बीन मेड इन द कैपिटल मार्केट, स्मॉल प्राइवेट बैंक्स, स्मॉल रीजनल प्राइवेट बैंक्स, PSU बैंक्स एंड ऑल, not on the large private banks. So many of the funds like flexi cap, right, like large cap, like multi cap, even for that sake mid cap, are missing out that small cap, small banks and all these things. So that is the kind of advantage for this fund because I can invest, it's a kind of flexi approach, right? And I can invest more in the mid cap and small cap compared to those flexi cap or mid cap or large cap or multi cap kind of. Then what benchmark has been chosen for performance comparison and why? NSE Financial Services is a benchmark because this is a broader benchmark which has somewhere around 20 odd stocks, right? And that is the only benchmark which is available right now if you want to include all the financial services in one basket. Should retail investors allocate this sector within a diversified portfolio? Correct. So say suppose a retail investor have 70-80% large cap, right? What he is missing out? वो मिस आउट कर रहा है स्मॉल कैप एंड मिड कैप का बैंकिंग और BFSI का रैली. So you can put some 4-5% of the large cap guys get put in the BFSI sector because it is 25% of the market cap. You cannot ignore, right? So वहां पे आप दे सकते हो. Then say suppose some guys have a 60-70%, 80%, 70% mid cap, right? वहां पे भी आप ये कर सकते हो कि he is missing out on the all the capital markets, fintechs, small cap, overall more mid cap exposure onto the BFSI sector and can increase the beta. Somebody who is having 80-90% in small cap, yes, उससे आप पूछ के दो क्योंकि उसका बीटा और इंक्रीज हो जाएगा because this FSI fund would be slightly higher beta. So that is the way you can allocate retail investor, allocate this sector within a diversified portfolio. Joel has asked a question. How does this fund dynamically manage sector and stock level risk across different credit and interest rate cycle within the BFSI scheme? Very good question. So see, ये जो सेक्टर है BFSI, जैसे मैंने बोला, ये बहुत ही ब्रॉड सेक्टर है और इस सेक्टर में सब सेक्टर बहुत है. बैंक्स, NBFC, अब बैंक्स में भी प्राइवेट, PSU, ठीक है, स्मॉल फाइनेंस बैंक, NBFC में भी व्हीकल फाइनेंस, हाउसिंग फाइनेंस, राइट? Then you have general insurance, then you have life insurance,
then you have a mutual funds, then you have a distributors, then you have a overall wealth management, then you have a stock broking, then you have a exchanges, then you have a depositories, then you have a whatever fintechs. So my point is कि इसमें क्या होता है कि say suppose अगर कभी बैंक्स में एनपीए का प्रॉब्लम आया तो मनी कैन मूव टू इंश्योरेंस एंड कैपिटल मार्केट. से सपोज अगर इंश्योरेंस में ग्रोथ की प्रॉब्लम आई तो मनी कैन मूव टू एक्सचेंजेस एंड एनबीएफसीज एंड ऑल. So that is what is there in terms of managing the interest rate cycles within the BFSI space. अगर interest rate cycle आपके favorable है और interest rate cut है, that benefits the NBFC, PSU bank, private PSU banks and SFBs and all. When interest rates are rising, ठीक है, तो आप अपना प्राइवेट बैंक्स में जाते हो, आप फी बेस्ड इनकम वाले मॉडल में जाते हो. सो दैट इज द वे यू मैनेज द सेक्टर स्पेसिफिक इंटरेस्ट रेट साइकिल. And then your stock level risk across different credit and stock. So stock level risk is that it would be a 20 to 25 stock portfolio. So average अगर आप देखोगे तो it would be somewhere around 4 to 5%, 5 to 6%. और मैं 50% आपको बोला कि मैं लार्ज कैप रखूंगा, तो लार्ज कैप में आपके स्टॉक लेवल लिक्विडिटी का प्रॉब्लम नहीं होता. So that risk is also mitigated. Hope I am able to answer. Then there is one more question. Dikshant Gupta, how are you managing the risk in sectoral focus fund as it is very volatile and picky at times? See, in my view, na, Dikshant, all the funds are volatile, right? I agree the sectoral themes are slightly more volatile. बट बीएफएसआई एज अ थीम इसमें क्या होता है कि इसमें एक थीम में कई सारे थीम है. से सपोज अगर 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 फार्मा या से सपोज अगर केमिकल, से सपोज अगर मैन्युफैक्चरिंग और डिफेंस, दैट इज अ सिंगल थीम की अगर एक जगह प्रॉब्लम आती है तो वो पूरा थीम नहीं है. यहाँ पे क्या है कि सेपरेट सेपरेट थीम है. बैंक्स का अर्निंग एंट्री एग्जिट पॉइंट डिफरेंट देन कंपेयर टू द एचएफसीज और देन कंपेयर टू द कैपिटल मार्केट, देन कंपेयर टू द इंश्योरेंस पॉइंट इज डिफरेंट देन कंपेयर टू द कैपिटल मार्केट. So you kind of rotate your sector to manage the volatility. But having said that, volatility would be there, and you need to manage the risk by the rotation the money among the sector. So that is there in terms of this question. Now I don't think so any other questions are there. If any other question, please let me know, and hope I am able to answer all the questions. Yeah, very well. Okay, Sandeep, I'll ask regarding valuations. If you see, compared to banks and all, I mean, the valuations are still reasonable. But non-banks may, if you go, I mean, these wealth management firms, AMC companies, they are all trading at, higher 25, 30, 40 P. So what will be the, is your outlook there, and what, is the growth justifying that P? And what will be your allocation to banks and non-banks? So 3-4 question. First of all, in terms of the valuation, right? Let me ask you a question. Is 25p is expensive, or 35p is expensive, or 15p is cheap? How do you judge that? So that will depend on a lot of factors. I mean, obviously, management, growth, yes. and other things. So yeah. Correct. So the point is that if some company or if some sector has a kind of growth visibility for the next 3 to 5 years, and the growth visibility is more than 25%, obviously those sector will be trading at a higher multiple compared to their historical average. And you have to based your assumption that okay, it would be a 20% growth or 25% growth, and you have to put a process in it that okay, if this is a 25% growth for the next 5 years, then what kind of P multiple you want to pay him. That is a process, and we follow that process, and based on that one can say that what is expensive and what is not. Many of the stock, a digital fintech stock or digital company was expensive at 1 year back also. From 1 year, they have doubled their stock price, and they are also expensive right now. So you have to see in terms of what kind of my overall earning trajectory is there, and what kind of assumption which you have taken, and that earning trajectory is better compared to the overall industry than the money flow there, and that is determine the valuation, right? What was your other questions? What will be the allocation to banks and non banks in the Understood. portfolio? Because see, Understood. what you have shown in the chart that banks have the market cap has gone up by 4 times, whereas for non-banks it is 15 times. Yes. It's a huge difference, right? Huge difference. So obviously, see, having said that, what I am telling you is my exposure to non-lending
non-lending would be overweight compared to the lending, right? In terms of the overweight, I would be overweight on non-lending compared to the lending. And in the lending also, I will be overweight in terms of the current beneficiary of the falling cost of funds, right? Compared to the regional. So that is the thing which I can give you in terms of where I would be. I have not made my mind, I have not fixated my mind कि मेरे को इतना ही बैंक रखना है या इतना ही लाइफ इंश्योरेंस रखना है या इतना ही एएमसी रखना है. अगर मैं फिक्स कर लेता हूं, then I am not playing the cycle. Yeah, that's all. Right. Yeah. So I have got another question. Acha. How do you see credit growth and financialization shaping this sector? See, that is what I have explained, right? In terms of credit growth and financialization, what I can see with the kind of lever which RBI and regulator has given in the last 1 year, the credit growth expected to and it has improving, right? 13% right now. So it will remain in the range of 12 to 13%. अगर industry credit growth इतनी होती है, तो बैंकों की credit growth 14%, 15% हो जाती है, right? And obviously, financialization is the theme. मैंने वो एक्सप्लेन किया कि किस तरह से financialization has helped in terms of the mutual fund, in terms of the efficiency of the bank, and in terms of the reduction of friction. So that is what is the theme which I feel it is shaping up really good for this sector, and the growth opportunity and the operating leverage of this sector will increase from the financialization only. Yeah. I think I'll only ask more questions. Okay, I have another question regarding in the budget. Budget के बाद अगर आप देखोगे bond yields suddenly went up and all the NBFC stocks crashed because obviously because I had heard a lot of conference calls from NBFCs and they were saying that जो RBI ने cuts किए हैं वो pass on अभी तक पूरा banks ने किया नहीं है. तो अगर अभी ये बॉन्ड यील्ड्स ऊपर जाएंगे तो वो बोल रहे हैं कि उनके मार्जिन्स में कॉस्ट ऑफ लेंडिंग में प्रॉब्लम आएगा थोड़ा मतलब. सो इज इट ट्रू और व्हाट इज योर व्यू ऑन दैट? No. So, okay. So, first of all, the repo rate cut has been passed on to the lender or not? That is the first question. They were saying that fully it is not passed on. So अगर 125 basis cut हुआ है, I think 50 basis point ही pass on हुआ है. ऐसे मैंने दो conference calls सुने थे. Generally on an average 50 से 70 basis point pass on हुए हैं. Because क्या होता है कि repo rate cut होने के बाद आपके borrowing rate कम होनी चाहिए, and that is the reason your MCLR is marginal cost of lending rate. So वो धीरे धीरे system में आता है. So generally it is a lag effect, right? And another and you will see some kind of more lending rate cut can happen there. But obviously, yes, the second part of your question is the 10-year yield is high. So your borrowing yield may not come down. Right? So in that sense, what I feel is that yield का structure अलग हो गया है थोड़ा, वो global structure में चला गया है. ठीक है, आपका डिमांड सप्लाई का गैप चल रहा है बॉन्ड में, and that is the reason your 10-year GSEC is higher, right? And that is the right point in terms of the borrowing cost उतनी जोर से कम हुई नहीं है. तो अगर borrowing cost कम होगी, then you will see a further rate cut and all. Having said that, जो retail growth की मैं बात कर रहा था, जो मैंने आपको दिखाया कि नॉन लेंडिंग रिटेल लोन ग्रोथ, पर्सनल लोन, होम लोन एंड ऑल, दिस ग्रोथ आर फ्रॉम द लास्ट 5 years मोर देन 15-16%, राइट? वहां पे आपके रेट हाई भी थे और अब रेट लो भी हो गए हैं. इंडिया का मार्केट, अगर आपके होम लोन में 8% इंटरेस्ट रेट हाइक हो जाता है तो आपके ईएमआई नहीं बढ़ता है, टेन्योर बढ़ता है. और वैसे ही अगर 1% कम हो जाता है तो आपका ईएमआई नहीं बढ़ता है, टेन्योर बढ़ता है इन टर्म्स ऑफ द रिटेल. Right. Even on the side of MSME में थोड़ा रिटेल थोड़ा पास हुआ है loan lending and all. With the further reduction in the cost of fund, it can further happen. For that, you have to see that when yields are coming down. In my view, yields will come down in next 3 to 6 months because वहां पे आपके supply gap of bond will start to normalize kind of. Okay. Good. Now I think we have one more. In the lending versus non-lending barbell strategy, what triggers a shift in weight between growth-oriented lenders and relatively stable fee business? Okay. So stable fee-based business in current environment is a growth leader, sir. So stable fee-based income is your AMCs, right? In terms of your distributors, they are the stable fee income. They are the kind of growth oriented. The question is कि lender और non lender में कब move होंगे?
So that is what I have said. That is what all the cycle I think I have explained in the last few questions, last few answers and all. With a high conviction portfolio of 20 stock, how do you manage downside risk if your top thesis doesn't play out as expected? Because So it's a that is what, concentrated portfolio, so it's asking. no, that is what I've said. 20 to 25 stocks in a BFSI is enough to manage the volatility. और उसमें भी मैं बोल रहा हूँ कि मैं 40 से 50% आप लार्ज लार्ज कैप मिड सब रखूंगा। लार्ज कर हाँ, जहां पे मेरा लिक्विडिटी ठीक हो जाएगा, और 40 से 50% मैं स्मॉल कैप मिड कैप रखूंगा, वहां पे भी मेरी लिक्विडिटी इतनी प्रॉब्लमेटिक नहीं रहेगी, राइट? सो वहां पे भी लिक्विडिटी ठीक ही रहेगी, सो टू मैनेज इन टर्म्स ऑफ द रिस्क and manage in terms of the volatility and all. Sure. Yeah. So I think we have no further questions. Thank you very much, Sandeep. Thank you. Really good, talking to you, and I mean the insights that you have given, very confident answers, and Thank you. Thank you. we're looking forward, pushing the fund, and we'll try our best. Thank you, sir. Thank you very much. And if any other question, please let Sugyan Yeah, know we'll and push. all. I'll be happy Yeah, to we'll answer. push. Yeah. Sure. Good. Thank you. Thank you. Thank you.